The race for SBI CBO 2025 has begun at Knowledgist. Knowledgist पर SBI CBO 2025 के लिए जद्दोजहद शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, प्रोबेबली आप लेट हो रहे हैं। हर साल बड़े नंबर पे वैकेंसी नहीं आएगा और साल दर साल जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। द लेवल ऑफ कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर. 1000 vacancy lesser than last year will drastically increase the level of competition. So you need to start your preparation with the best in industry. So for you, the task is to find out which platform has delivered more than 2500 plus success stories last year. Go check out our success stories in numbers which we are uploading every day. Now the time is to enjoy the sample session. Post that. Don't forget to check out the course link and everything in the description, comment section, in our application, in our website. So see you inside the class. RBI circular for all. In the month of November, there is absolutely zero content for RBI circulars. But you will always ask me, sir, why there is no class for November? So one or two circulars is there. So we will read it. Unnecessarily, I will not put notifications that will never come in your exam, right? So if the content is crisp, it is better for us. Right or wrong? Right or wrong? For the sake of taking a class, I will not put unnecessary things. So in 5 to 10 minutes, we will be covering RBI circular. Then I will go for monthly banking for November. And day after tomorrow, I will cover December RBI circular, or on 20th, I will cover December RBI circular, December monthly banking for your exam point of view. Okay. For rest, it will be carry forward to the January session. So RBI expands foreign exchange reporting to trade repository, right? So it is not a big deal for people preparing for internal bank promotion, CBO, etc. But few points as it is discussed, so we must know what is a trade repository. Okay, and in Forex, foreign exchange transaction reporting is there. All banks have to report their foreign exchange transactions to RBI, राइट और रॉन्ग? हर एक बैंक को अपना फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो है आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है. कौन से फॉर्मेट में रिपोर्ट करना पड़ता है, कौन से पोर्टल में रिपोर्ट करना पड़ता है, कमेंट में बताइए. इन विच फॉर्मेट? As they have discussed about the forex reporting for trade repository, we must go to the other static correlated to it, because I find this is completely non-necessary for your exam point of view. So I will not waste your time. I will be asking you the right question at the right time, not CIMS. You know FITR? You know one thing about FITR? FITRs का फुल फॉर्म बताइए. FITRs का फुल फॉर्म बताइए. FITRs में होता है, FITRs का फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए. Right? So RBI has expanded its trade reporting. Now every NBFC bank, everybody has to report their forex transaction. FITRs portal is called Foreign Exchange Transaction Electronic Reporting System. All bank has to do it. So now trade repository has also need to do it. Money changing activities are excluded from the directive and governed by the master direction. ADs must ensure accuracy, reconcile data regularly, and undergo audits. Completely unnecessary, but I will only focus on what is a trade repository. It is a centralized platform. So a trade repository is a centralized platform for collecting, storing, and disseminating trade data. It acts as a database for OTC derivatives transactions, ensuring transparency and regulatory oversight. For that, in India, CCIL, Clearing Corporation of India Limited, hosts the trade repository services mainly in India. ठीक है, ठीक है. तो कोई बात नहीं है, CCL एक ट्रेड रिपोजिटरी काम कर रहा है. मतलब जो ट्रेड डाटा है, डेरिवेटिव डाटा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, मतलब ट्रेड रिपोजिटरी मतलब ये आपका बिजनेस वाला ट्रेड नहीं है. दिस इज अबाउट द ट्रेडिंग, साइमल्टेनियस बाय एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. आप जब शेयर मार्केट में एक दिन के लिए पैसा लगाते हो, फिर उसको उठा देते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हम उसे कहते हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग. सच काइंड ऑफ ट्रेडिंग. ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स फॉरेक्स, स्वैप, करेंसी, राइट, आपका डेरिवेटिव ट्रेडिंग, future and option trading. These are tradings. Okay, so the repository, those who deal with trade data,
दे हैव टू रिपोर्ट देयर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। आजकल आप देखते हो कमोडिटीज, आपका बिटकॉइन वगैरह, बिटकॉइन तो लीगल नहीं है इंडिया में, लीगल रूट से नहीं जा रहा है, आरबीआई उसको रेगुलेट नहीं कर रहा है, बट आप देख रहे होंगे ना, ऑक्टा एफएक्स बहुत आता था, उसको बैन कर दिया आरबीआई ने। फॉरेक्स ट्रेडिंग, बिकम ए बिलियनर बाय ट्रेडिंग ओवरनाइट। मैंने 5,000 रुपए लगाया और मेरा 5 करोड़ सुबह तक हो गया। सो ये जब सब ये फॉरेक्स वाले ही करते हैं ना, ठीक है, तो ये डाटा जो है, ये सब डाटा को रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट? गॉट माई पॉइंट एवरी इंग्लिश एंड हिंदी स्टूडेंट? Absolutely zero content in the month of November related to RBI circular. You don't need to go through all the details. Other months there are so many things, but this time there is no such data because we are discussing CCIL. You need to know the full form, Clearing Corporation of India Limited, that deals with all the clearing. What is clearing? What do you mean by clearing? Yes, CCIL gives LEI, okay, legal entity identifier, and acts as central counterparty and also trade repository. Yes, very good. CCIL is a clearing corporation. Clearing happens whenever there is a trade, right? I am buying 1,000 shares of Reliance today, selling it tomorrow. You are buying it, you are selling, and Hari is buying it, Sultan buying it, Pari buying it, right? Tom, Dick, and Harry is buying hundreds of shares. But how come we know at the end of the day this share is deleted from my account, debited from my account, and credited to your account? How come you know? It is being cleared by this SCIL. This is the job of a clearing corporation. It acts as a repository. It disseminates, it involves, it collects the data, okay, processes it, एंड आज पर आवर रिक्वायरमेंट इट गिव्स इट। ठीक है, मान लीजिए मैंने आज 1 लाख शेयर खरीदा रिलायंस का। what will happen if my depository, like I have bought it from Zerodha, Paytm, Grow, ICICI Direct, okay, SBI Demat account, they got crash। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ही था, कोई सिस्टम इधर उधर हो गया? तो द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कीप्स ऑल द डाटा, दे डू द सेटलमेंट, ओके। Yes, clearing means settlement of fund. They settle the fund by end of the day, credit it. That is done by them. ठीक है, इतना जानने की जरूरत नहीं। आप नाइदर यू आर एनबीएफसी नॉट ए ट्रेड रिपोजिटरी, द डाटा इज देयर, रीडिंग टू मच ऑफ डाटा इज कंप्लीटली अननेसेसरी, ओके। अच्छा, what is FAR? We will discuss what is there in the terms used by RBI circular. Okay, the RBI, okay, right. The RBI has designated 10-year sovereign gold bonds to be issued in the second half of FY 24-25 as a specified securities under fully accessible route, allowing unrestricted investment by non-resident. What is FAR? One is FAR, another is government route, another is approval route, or you call it government route. When a foreigner, when an FPI, when a foreign portfolio investor, when a foreign institutional investor, okay, just a second, Sanjay. Yes, wants to invest in Indian securities, he has two ways. One is fully accessible route, मतलब बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के वो, whenever a foreigner wants to put money in Indian security, Indian market, it is highly वेरीफाइबल, राइट? क्योंकि कोई किसी को पैसा फ्री में नहीं देता। अगर कोई आपको ज्ञान कहीं पे फ्री में दे रहा है तो आप उसको डाउट करना चाहिए। अपने माँ बाप के अलावा कोई किसी को दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं देता, ठीक है? कोई कुछ भी फ्री में नहीं देता। इसीलिए जो फॉरेन से एनजीओ फंडिंग आता है, द फॉरेन एनजीओ फंडिंग कम्स टू इंडिया इज हाईली स्क्रूटिनाइजेबल, okay, income tax and everybody looks into it. That comes to one account of SBI in New Delhi, then it is being distributed. ठीक है? Why? Because foreign money can come to India for terrorist financing. वही पैसा बाहर से आएगा, आपका और हमारा घर उड़ा दिया जाएगा, आप और हम ट्रेन में जा रहे होंगे, बॉम्बार्ड कर दिया जाएगा। So, but there is one route where you can, up to certain percentage of amount, you can invest directly without government approval, but still that data is collected by RBI. That data is collected by RBI through the mechanism like FITR, etc. All the foreign money coming to India, going out of India is being scrutinized. And beyond that limit, you have approval route or government route, you have to, like FDI. Okay, in
private sector bank, what is the FDI limit? In private sector bank, what is the FDI limit? 49% can be invested directly. 49% can be invested directly, yes. 74, but out of that 49% can be invested in this FAR route, okay, free route, and rest 25% has to be invested with गवर्नमेंट अप्रूवल. ठीक है, तो किसी भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, हिंदी में भी बोल देता हूं, इन्वेस्ट करने के लिए दो रूट है. फॉरेनर को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए दो रूट है, नॉन रेसिडेंट को. ठीक है, नॉन रेसिडेंट कैन बी ए फॉरेनर, कैन बी एन एनआरआई. तो उनके लिए दो रूट है. एक रूट है डायरेक्ट रूट, एक रूट है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट. तो सोवरेन 10 साल का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको फुली एक्सेसिबल रूट में फ्री में वो इन्वेस्ट कर सकता है डायरेक्टली इन फुली एक्सेसिबल रूट विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल. इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को फंडिंग आएगा. फार इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 enables like entities like FPI, NRI, OCIs to invest in select government securities without any ceiling. ठीक है, this aligns with India's inclusion in JP Morgan Chase emerging market bond index and upcoming addition to Bloomberg and FTSE Russell इंडाइसेस. तो ये सब इंडाइसेस में इंडिया का बॉन्ड मार्केट में इंडिया के सिक्योरिटीज ऐड होने के कारण से कौन कौन से में? जेपी मॉर्गन चेस, ठीक है, ब्लूमबर्ग, एफटीएसी रसेल. ठीक है, ये सब मार्केट में, शेयर मार्केट में, बॉन्ड शेयर मार्केट के बॉन्ड इंडाइसेस में जैसे निफ्टी वगैरह है, ये सब है उसी तरह का बॉन्ड का इंडाइसेस, उसमें इंडिया को अलाउ कर दिया गया है. ठीक है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इशू 20,000 crore via sovereign gold bond including 2 10-year and 2, sorry, not gold bond, it is green bond, sorry, SGB होता है sovereign gold bond, SGRB होता है sovereign green bond. 2 30-year bonds and part of the 6.61 lakh crore borrowing plan for FY 24-25. तो कितना बोरोइंग किया जाएगा? एक 10-year मैच्योरिटी वाला, एक 30-year मैच्योरिटी वाला, 6.61 लाख करोड़ बोरोइंग FY 2024-2025 सेकेंड हाफ में होगा. ठीक है, दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन. ये एक सैम्पल सेशन ही था, कंप्लीट सेशन. और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से. कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, ऑल्सो इन योर एप्लीकेशन एंड इन योर वेबसाइट. सो डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन फ्रॉम देयर. थैंक यू.